व्हाट इज अ फंक्शन? सबसे पहले इट इज अ मैथमेटिकल relationship in which every input has a defined output. Is that right? तो इनपुट को हम अक्सर इससे डिनोट करते हैं, वेरिएबल एक्स से, और आउटपुट जो है एफ एक्स से भी लिखा जा सकता है, जी एक्स से भी लिखा जा सकता है, एच एक्स से भी। इज दैट राइट? सो हम कहते हैं कि दो तरह के फंक्शंस हैं हमारे पास, एक है वन टू वन फंक्शन एंड द सेकंड इज many to one function. Graphically, how do we realize that something is a function? Graphically हम कैसे देखते हैं? Vertical line test. What is a vertical line test? Says that draw a vertical line and move it left to right. It should not cut the curve at 2 points simultaneously. The graphical तरीका होता है, once we have the graph and if the question wants us to identify it is a function or not, कोई भी just a function, सही है ना? graphical test for a function. सही है? डोमेन किसे कहते हैं बेटे? allowed input in a function और ये लिखी कैसे जाती है? x is less than something या x is greater than something या x is x is an element of real number. सही है ना? मतलब रियल नंबर का मतलब फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, या x नॉट इक्वल टू, तो अलाउड इनपुट बता रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन these are the values that are allowed. ठीक है? ओके. इसी तरह व्हाट इज अ रेंज? पॉसिबल आउटपुट्स. और वो कैसे लिखते हैं? एफ एक्स इज ग्रेटर देन, अगर फंक्शन एफ एक्स में है, या अगेन एफ एक्स इज लेस देन एंड इन बिटवीन. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द functions. एफ एक्स इज अ रियल नंबर एंड सो ऑन. सही है? तो finding a range through a domain, मैं हमेशा क्या कहता हूँ? ग्राफिकल assistance is necessary. You must know how the function is varying graphically. Without that you cannot find. हाँ, value input करके for linear graphs. सही है? value input will only provide range of one-to-one function. Okay? Graphical and assistance for all functions. इसलिए जो भी आप whatever graphs, whatever functions in your are there in your syllabus, almost all the functions are accompanied by their graphs, whether it be trigonometric, quadratic, linear या basic rational function भी हो थोड़ा सा,
So it is accompanied by a graph. जो rationalness में what do you need to think? How does a denominator vary? Denominator के इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या होता है. इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक और साइक्लिक और पीरियोडिक फंक्शंस, उसमें वैल्यू इनपुट से कभी भी हमारा आंसर नहीं आ सकता. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि साइकिल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है. रेंज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, डोमेन आर द पॉसिबल इनपुट्स वैल्यूज ऑफ x. यहाँ तक क्लियर है नहीं है? ओके. इनवर्स हमारे पास क्या होता है? हम क्या कहते हैं? इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर अ 1-to-1 domain of inverse is the range of the original function, and similarly range of inverse is the domain of the original function. Then comes composite functions. So होता क्या है? अगर if I am writing f g of x, so what is basically happening? The entire function of g is being input in f. हम input किस में डालते हैं? पहला input हम किस में डाल रहे हैं? इसमें. So what function, what processes does it goes through? But once we input the values, first our values go through which particular operations? Operations of g or operations of f? Operations of g. So domain of g is followed, right? Because we are going through operation of g, and the function can only exist when range of g is in the domain of f. सही है? होता क्या है? g का पूरा इनपुट हम निकाल के f में डाल रहे होते हैं. And the range of the composite function, you have to figure it out on your own. There is no particular rule for finding the range of a composite function. Is this clear?